Okay, so but in today's class, we are moving towards giant covalent structures. Giant covalent structures. Right. This is the new task that we need to talk about in today's class, which is giant covalent structure. If you talk about giant covalent structure, so actually we have only three giant covalent structures in our syllabus. The one is diamond. The second is graphite. And the third is sand. And the graphite and diamond, they both are allotropes of carbon. What is allotrope? Allotrope means they are the same element with different shape, or you can say that appearance, right? The appearance is different, but the elements are the same. So they both are the form of carbon. They both are the form of carbon, and they are actually in elemental form. Not any other element is combined with carbon in these two structures. सिर्फ carbon है, बहुत सारे carbon हैं एक साथ, ठीक है ना? और कोई इनके साथ attach नहीं है, ठीक है? Then sand is actually the giant covalent compound, right? It's giant covalent compound, and the formula is SiO2, right? Is this SiO2? SiO2, right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So let's start with diamond. So the first one is diamond. Diamond that we need to discuss. Diamond is actually carbon. This is one of the type of carbon. Only carbons are there, and we don't know exact number of carbons over there, but the carbons are there, right? So if someone asks you diamond is what, so you can say that it is an element, right? Only carbon is there. Okay, then what is the structure of diamond? Carbon is actually from group number 4. Carbon is actually from group number 4. So there are 4 electrons in the outermost shell of carbon. So a single carbon form 4 bonds with 4 different carbons, right? बच्चों, Yes, sir. एक कार्बन ने 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डिंग की हुई है. देन हर एक कार्बन ने दोबारा से 4 डिफरेंट कार्बन से आपके पास क्या की हुई है, बॉन्डिंग की हुई है. इट्स लाइक दिस, राइट? सो यू कैन इमेजिन, फॉर सपोज अगर हम इसको सिर्फ बना नहीं रहे तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ. यू कैन इमेजिन दिस बच्चों, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ ह्यूज द स्ट्रक्चर शुड बी. ठीक है ना? एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स, देन फिर वो जो 4 कार्बन होंगे उनके 16 बॉन्ड्स, देन वो जो 16 कार्बन होंगे उनके 64 बॉन्ड्स, एंड देन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी इंक्रीज. दैट इज व्हाई ये ट्रेंड याद करने की जरूरत है. क्या याद करने की जरूरत है सर? ये जो ट्रेंड जो है कि कार्बन के बाद 3 और कार्बन, फिर 3 और फिर 4, फिर जो भी है, तो ये याद करने की जरूरत है? नहीं, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर सीखना आपके लिए जरूरी नहीं है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर डायमंड है. तो अगर वो आपको एग्जाम में बना कर दे दे तो यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स अबाउट डायमंड. क्या ये डायमंड है तो डायमंड ये होता है, डायमंड ये होता है, आपको पता होना चाहिए, देख कर आइडिया होना चाहिए. ठीक है? ओके सर, ठीक है. So this is one of the structure of diamond. So the first thing that you need to keep remember about सर diamond आप is, इसको थोड़ा ह्यूज ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. okay, देखें हम इसको दोबारा से भी ड्रॉ कर सकते हैं. That's not a big deal. That's simple. That's quite simple. For suppose a single carbon, if you talk about a single carbon has 4 electrons in the outermost shell, right? Like this. Okay. So एक ऊपर बॉन्ड Yes, होगा, sir. किसी का ऊपर वाला बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं मैं, लेकिन बाकी 3 दिखा रहा हूँ. ठीक है ना? क्योंकि ऊपर वाला भी अगर चलाऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है? और ये जो ऊपर वाले कार्बन को छोड़कर बाकी कार्बन्स के मैं आपको और बॉन्ड बना के दिखा रहा हूँ. देखें तो इसके और बॉन्ड बन सकते हैं इस तरह 4. एक ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, 3 और बन सकते हैं मजीद ना. सो इट विल बी आल्सो कार्बन 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 कार्बन, राइट? और फिर इस तरह ये कार्बन्स भी क्या कर सकते हैं, ये कार्बन्स भी 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, राइट? लाइक दिस with different carbons.
like this, right? And then ये carbons भी आपके पास different bonds बना सकते हैं, ये carbons भी आपके पास different bonds बना सकते हैं, and then so on. आप देखें हर कार्बन के पास एबिलिटी है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो वो डिफरेंट कार्बन से 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए मेहनत कर रहा है. So you can see this, a single carbon can form 4 bonds, so every carbon is bonding with 4 different carbons. So that is why the structure is too giant. और ये आप समझ लें कि नॉन स्टॉपेबल है, चलता ही रहेगा ना जब तक ये आपस में खुद ही मिलना शुरू ना हो जाए आपस में, ठीक है ना. So it is a giant covalent structure, a lot of bonds over there. Even you can say that covalent compounds are having low melting and boiling points because they are having simple molecular structures. That's fine. जैसे अगर आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल है, राइट? इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड्स हैं. सो वी नो दैट यार 4 बॉन्ड नहीं है, बस 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 4 बॉन्ड वाली एनर्जी ही चाहिए होगी, ठीक है ना. बट अगर आप इसको देखें सो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर, यू कैन से दैट बहुत सारे मतलब अनकाउंटेबल है. इतने सारे बॉन्ड्स मैंने अभी बना दिए. उसके अलावा एक्चुअल में पता नहीं कितने होंगे, 1000 बॉन्ड्स, मे बी 5000 बॉन्ड्स, मे बी 4000 बॉन्ड्स. सो फॉर सपोज अगर आपके पास एक पीस ऑफ वुड है, अगर आपके पास एक पीस ऑफ वुड है तो इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कम चाहिए, राइट? तो सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए. यू कैन इजीली ब्रेक देम आउट. बट इफ यू हैव अ बंडल ऑफ स्टिक्स और उनको तोड़ना हो आपने, so it requires a greater amount of energy. So the same phenomena is over here. If you have a number of covalent bonds, then it's difficult for you to break them out with a lower energy. You must need to give a higher energy over there. That is why these compounds are strong, hard, with high melting and boiling point. Am I right, Bacho? Got this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. if you talk Got about it. the physical properties, of diamond, so you can say that, Bacho, the first physical property of diamond is the hardest solid in the world. This is hard, right? And then second, you can say that it has a high, or you can say that very high, because we are using the word high in ionic bonding. So you can say that very high melting and boiling point, right? If you talk about sodium metal is one of the metal which is the soft metals. The melting point of sodium metal is somewhere 98 degrees Celsius. If you talk about ionic compound, which is NaCl, this is one of the ionic compound. So it has a melting point of 801 degrees Celsius, right? If you talk about magnesium metal, which is actually a little stronger metal than sodium, so it has almost a 660 degrees Celsius melting point. And if you talk about like iron, so it is a more stronger metal, so it has somewhere 1538 degrees Celsius melting point. So these are the metals. You can see this, their melting point increases as the metallic bonding increases. This is ionic compound, that is why its melting point is higher. But if you talk about covalent molecules, like chlorine is a covalent molecule, so its melting point is minus 100 degrees Celsius. So you can see this, that how lesser the melting point of covalent molecules are, right? And if you talk about diamond, so it is somewhere 3500 degrees Celsius. So you can see this, the melting point of giant covalent structures are completely different by others. They are topmost, they are having highest melting point, right, Bacho? Right, sir. Yes. Sir, allotropes की chemical properties same रहती है ना? Allotropes की chemical properties बिल्कुल same रहती है because the elements are same, so the chemical properties are also same, right? Yes, Sir, if we have to Yes, tell sir. the reason why it is hard, diamond is hard, तो हम ये बताएंगे कि it has highest melting point. They don't ask for this, that why diamond is hard. They can ask for this, why the melting and boiling point of diamond is higher, right? So you can say that the melting and boiling point is higher because there are a lot of covalent bonds over there, so they require a greater energy to overcome. या फिर ये reason भी हो सकता है कि it is a giant covalent structure. Giant covalent structure, yes, this is the structure, no? If they ask for in terms of structure, so you can say that because giant covalent compounds having giant covalent structure, that is why
they have high melting point. And if they ask about bonding, so you can say that there are a lot of bonds over there, right? Number of covalent bonds are very much high, right? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we can talk about the next thing. So they are insoluble in water. They are insoluble in water. पानी के अंदर कैसे होते हैं? Insoluble होते हैं, ठीक है? उसके अलावा डायमंड इज इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. So because इसके पास delocalized electrons नहीं होते. Do not have सर ये एक एक दो नंबर के लिए आती है ना ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है. जी बेटा, रीजन पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है? डिफरेंस भी पूछ सकते हैं वो. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ठीक है चाहिए. सर. If you talk about the uses of diamond, बच्चों, so the uses of diamonds are actually diamond can be used as a jewelry purpose because it is a shiny and expensive one to give someone, ठीक है ना? उसके अलावा ये कटिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है because it is the hardest on the planet, so you can say that cutting और grinding के लिए भी इस्तेमाल होता है. Is it right, बच्चों? Yes. सर इसको हम वहाँ भी लगा सकते हैं ना सर, वो जो 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 कटिंग मशीन्स के उस पे एजेस पे. Yes, it's used for cutting, ना? So it's a blade for cutting. ठीक है सर. Yes, is that clear, every one of you? So you can take a picture of this if you want to make your notes. Yes, so should we move towards the next thing? Yes sir. Yes. Sure, sir. Let's move towards the second structure, which is actually graphite. The second structure is graphite. Graphite is also the allotropic form of an NEK. It's also element of you can say that it's element carbon, and the number of atoms of carbons are, you can say that, unpredictable. They are unstoppable. They are just connecting together in a many ways. So the number of carbons are not predictable. So the structure is like this. The structure is like this. All the corners are made up of carbons. All the corners are actually made up of carbon. So the structure is like this. These all corners are actually carbons. These all are carbons. So in a single, if you just want to see hexagon, you have 6 carbons. Then over here, we have carbons, carbons, carbons like this. And a lot of structures as well. यहाँ से भी connected होगा, but I am not going to connect this. Right? ये इस तरह connected होंगे, but I am not going to connect this. मैं बस इतना सही बना रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा आपके पास इस तरह के बहुत सारे molecules एक दूसरे के ऊपर slide कर रहे होते हैं. We have a lot of molecules over there made up of this type of hexagons, right? And like this, they are surrounding each other in this way. This is the structure for, you can say that, graphite. And same as it is, they are going to connect with more carbons, but I'm not going to show every carbon over here. You can see this is a different molecule, and over here a molecule is on molecule. So they are like this. This is an intermolecular force between the molecules. This is a different molecule. This one is a different molecule, right? And this one a different molecule of a number of carbons. And these are the lines. You can see this, that molecules attracting each other. This is an intermolecular force, right? So you can see this is a structure of graphite. Due to this type of a structure, graphite is solid, but a soft solid. Why? Because you can see this, that the molecules, the layers of molecules sliding over each other. So you can say that this is the soft solid, right, Bacho? Yes. Right, And sir. the melting and boiling point is also high, very high melting and boiling point. The same thing, because the structure is giant, the melting point and the boiling point is very high. But the very unique thing is they are the conductor of electricity. They are the only non-metal conductor of electricity. इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक non-metal electricity conduct कर सकता है, तो that is actually graphite. Graphite is the only conductor of electricity. Why? It can conduct electricity. So you can see this, every carbon, if you just focus on this carbon, 1, 2, 3 bonds.
If you focus this carbon, 1, 2, 3, 3 bonds. If you focus this carbon, 1, 2, 3 bonds. Every carbon has 3 bonds. Every carbon has 3 bonds, and we know that carbon has 4 electrons in the outermost shell. Carbon के आखिरी shell में 4 electrons होते हैं. But right now this is bonding. This is showing the bonding with 3 carbons, right? So there are 3 bonds. So there must be 1 free electron out of the 4 electrons of each carbon. Every carbon out of 4 electrons, the 1 electron is free. That means they can conduct electricity. So we have delocalized electrons over there. So that is why they can conduct electricity. Yes, bacho, is that clear? Sir, ये sir. ये electrons आपने last- layers के- Okay. क्या करो बेटे? Sir, ये electrons layers के बीच में होते हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हर लेयर में होंगे. लेयर के बीच में नहीं होंगे, हर लेयर में होंगे. देखें ये कार्बन है फॉर सपोज ना, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. जैसे फॉर सपोज ये इलेक्ट्रॉन फ्री है. इस कार्बन के आपके पास 3 बॉन्ड बने में, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. एवरी कार्बन हैज one free electron. Every carbon. So a lot of carbons over there and a lot of free electrons over there. So every carbon has 1 free electrons over there. So there must be delocalized electrons by which the electricity can conduct, right? Yes, sir. Sir, सर it ये is the लास्ट पॉइंट में conduct. क्या लिखा हुआ है? ये आपने जो Last- लास्ट पॉइंट लिखा है. Insulator. Oh, sorry, insulator. Insoluble. This is insoluble in water. ओके सर. This is insoluble in water. They are insoluble in water. Right? Graphite molecules are insoluble in water. Is it right, bacho? Yes, sir. Right, sir. Yes sir, right. Sir, जी बेटे. सर एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर का दूसरे जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है? देखिए बेटे, अभी आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट आपके पास जो है मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. ऐसे ही नहीं मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन हो सकता. बट राइट नाउ इन योर सिलेबस वी जस्ट हैव अ कंपैरिजन ऑफ विद कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स एंड द जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ionic compounds and giant covalent structures. We don't need to compare 2 giant covalent structures together. Right, sir. Okay, so if you talk about the uses of graphite, so the very useful thing of graphite is you can say that they can be used as an electrode. Electrolysis में आप इसको use करोगे, ठीक है ना? Because it can conduct electricity. क्योंकि ये electricity conduct करता है, and it is a good solid and unreactive solid. That is why it can be used as an electrode. Then the second use is this can be used as a lubricant. This can be used as a lubricant because it is a layered structure, so the layers can slide over each other. That is why they can work as a lubricant. Layers can slide over each other. That is why it can work as a lubricant. Right, बच्चों? सर लेकिन जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो तो यूजुअली मतलब लिक्विड ही होते हैं ना, इस तरह कार इंजन के दरमियान जो वो होता है लिक्विड ऑयल. तो सर ये कैसे यूज होगा It एज अ is, लुब्रिकेंट? it's not important that all the time the lubricant should be liquid. Sometimes finely powdered solid can also work as a lubricant. For suppose if you have talcum powder in your house, you can जी सर. have this in your hand, right? The talcum powder, you can have this in your hand. You will feel that the friction in your hand will be removed, right? If the powder is a high quality powder, for example, for the one which is the most costly talcum powder, the main thing is that it is completely finely powdered, right? That is why it will be more used as a lubricant. And when there are two surfaces, or you can say that two horizontal surfaces that are completely in contact with each other, then we can use powder lubricants between the two surfaces, right? सर तो जिस तरह जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं वो भी ये यूज करते हैं ताकि उनके हाथ की फ्रिक्शन कम हो जाए जब वो रॉक को मतलब वो करें होल्ड वगैरह. Yes, तो रॉक maybe. क्लाइंबर्स Even you can see this sometime when we are going to bat in the cricket when we are going to bat, the batters do their hands with soil ना, वो अपनी soil के साथ अपने hands को क्या करते हैं, थोड़ा सा सूखा करते हैं ना, just want to remove the moisture from the hand. So उससे भी आपके पास काफी सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना? तो solid वाला जो lubricant होता है उसका काम अलग होता है, liquid वाला जो होता है वो slippery हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना?
ठीक है सर। सर पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है? Yes, pencil may be graphite होता है, which telling you that the graphite is a soft solid. That is why it is going to be consumed when you're writing on the paper. राइट Right? सर। अगर ये sir. डायमंड जैसा, अगर ये डायमंड जैसा होता हार्ड सॉलिड, डेफिनेटली ये आपके पेपर को फाड़ देता, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता. राइट? राइट सर। Is it right, every one of you? All clear sir. Right, sir. Yes, sir. Okay, so let's move on towards, and if you want to know the name of their structures, if you want to know the name, so I can even tell you the names of their structures. The diamond can be known as a tetrahedral structure. Whenever a carbon is forming 4 different bonds like this, so these types of structures can be known as tetrahedral structures. इसका नाम है tetrahedral structure. You can call them tetrahedral structure. So this is the name of the structure. You can use even this name for the structure. And this is actually carbon forming 3 different bonds. So this type of structure can be known as trigonal planar. So you can even remember the names like this if you want to, right? And then the last giant covalent structure is actually sand. The sand is actually the only compound structure, which is SiO2, right? So over here it is also tetrahedral. It is also tetrahedral because a single silicon forming 4 different bonds with oxygen like this, right? Unlike this. And then every oxygen forming 2 bonds like this with silicons, and then silicons forming 4 bonds again. Like this. So you can say that it is also giant covalent structure, and then structure is again tetrahedral. If you talk about the physical Sir? properties of sand, G. सर टेट्राहेड्रल की स्पेलिंग HED नहीं होता, Tetrahedral, HYD. हेड्रल होता है सर. I think it should be HYDRAL. सर आई थिंक इट शुड बी ED, हेड्रल होता है. Yes sir, Google कर see. लेना. Let's see. Tetrahedral. Yes, you are right. I'm wrong. But why I'm wrong? I thought it should be Y. Okay. So we have one claim over here. The spelling mistakes are not going to be deduct your marks. Sorry for this, but I thought it should be Y. But Google is also telling E, so I am speechless. So it's E. Okay. Okay sir. Okay. Sir, Thank what you. does tetrahedral means? Tetrahedral means when the structure is like this in the 4-dimensional structures, 3-dimensional structures, when there are 4 bonds, x-axis, y-axis, z-axis, right? Right sir. Okay, Sir, so हर physical, ऑक्सीजन के साथ 4 एटम्स बना रहे हैं और हर ऑक्सीजन कौन से 2 एटम्स बना रहे हैं ना? yes, ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसको, तो वो सिर्फ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. सिलिकॉन को 4 चाहिए तो 4 बना रहा है. Right. So they are also hard. We know that sand is hard and also very high melting and boiling point. Very high melting and boiling point. And this is also insoluble in water. We know this. It's also insulator. It cannot conduct electricity because it does not have free moving ions or electrons. And if we talk about their uses, so they can be used for the formation of glass. We can say that it can be used for the construction purposes. अब आपका मसला है कि आपको क्या बनाना है, तो as you wish, आपको घर बनाना हो, आपको refractory बनानी हो, whatever you are going to form, it can be used as a construction purpose. Right, बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Clear. Yes sir. Anything Yes. that you want to ask about this? No, sir. No sir. Okay. So then we have the last part of our chapter, which is metallic bonding. This is the last part of our chapter, metallic bonding. Metallic bonding is something you need to keep remember. Sometime the students got stuck over here when they talk about ionic bonding. So the definition in their minds are like when metals lose their electrons and the non-metals gain that electron, it will be ionic bonding. That's completely fine, right?
Then we talk about covalent bonding. So when we talk about covalent bonding, so the definition in their mind is actually when non-metal share mutually the electrons to the next non-metal, that will be covalent bonding. That's absolutely fine. But when we talk about metallic bonding, so they will be like thinking in this way that there should be the bond between metal and metal, right? There should be a bond between metal and metal, which is completely wrong, right? You need to keep remember two metals cannot form a bond between together. There should be alloy, which is a mixture of metal, right? When you mix two metals, it will. हो गया था तो आप रिपीट कर देंगे कि आपने 2 मिनट में क्या बोला? Yes, Last 2 the minutes. metallic bonding is actually it is actually the type of bonding which is present in a single metal. You need to keep remember the metallic bonding is not a bonding between two metals. It is actually what it's a bonding within a metal, a single metal, right? एक ही मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, किसी दूसरे मेटल के साथ कनेक्शन मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट? और अगर दो मेटल्स को आप मिक्स करते हो तो इट विल बी अ मिक्सचर. देयर इज नो कंपाउंड बिटवीन टू मेटल्स. फॉर सपोज अगर आपने आयरन और जिंक को मिला दिया तो वही आयरन जिंकेट नहीं बन सकता या जिंक फेरेट नहीं बन सकता. देयर विल बी नो कंपाउंड बिटवीन टू मेटल्स. दे आर ऑलवेज अ मिक्सचर एंड दिस इज नोन एज एलॉय. ठीक है ना? दो मेटल्स जब भी मिलेंगे तो वो मिक्सचर बनेगा, वो एलॉय बनेगा. देयर विल बी नो कंपाउंड बिटवीन टू मेटल्स. So the metallic bonding is not actually the bonding between two metals. It is actually the bonding within a metal. एक ही metal के अंदर और हर metal के अंदर आपके पास metallic bonding होती है. So it should be like this. For suppose if you talk about the structure of metals, so the atoms in the metals are arranged in layers like this. They are well arranged. They are well arranged in layers like this. Right? And what is actually the metals do? Metal lose their electrons within a structure. वो अपने structure के अंदर ही अपने electrons को lose कर देते हैं. So when they lose their electrons, they become positively charged and their electrons are moving throughout the structure. Same as it is if this metal loses its electron and the electron is moving throughout the structure somewhere and it becomes positive. Same as it is every atom of the metal do, they will lose their electrons and the electrons are revolving throughout the structure. Right, so that is why the electrons are delocalized, or that is why we call them a sea of electrons, a sea of electrons, right? So in every metal atoms, they lose their electrons and the electrons are delocalized throughout the structure. They are moving randomly in the structures like this. And we know that this charge of the electron is negative. The charge on the electron is negative. Electrons are negatively charged particles, and now the nucleus become positive, right? So it is positive and electrons are negative, so they can attract. So the electron of any other atom, when attracts the nucleus of the other atom, it will be a metallic bond. किसी और atom का electron किसी और atom के nucleus से attract होना शुरू हो जाता है, that will be what? A metallic bond, and it is always in a elemental form of metals, right? So you can say that. Sir, can you explain again? Yes, this is actually the delocalized electrons जो होते हैं वो negatively charged होते हैं. Electrons are negatively charged particle. So जब वो delocalize होते हैं तो जो protons ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव ना. तो पॉजिटिव न्यूक्लियस किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट करता है ना, उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं. किसी और का इलेक्ट्रॉन किसी और के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है. सही है बच्चों? All right, sir. Right, sir. All right, sir. Right. So you can say that it is actually the positively charged ion. Now, again, this is all about the ions. So you can say that this is the electrostatic force of attraction. Again, like ionic bonding, because there were two ions and there are positively charged particles. So you can call this type of force of attraction electrostatic. So this time also you can call this is electrostatic force of attraction. This is electrostatic force of attraction. But the connection is now different between this is the electrostatic force of attraction between what, bacho? Between delocalized electrons, and positive ions. This was not like ionic bonding between positive and negative ions. This time positive ions and negative particle, right? Positive ion and negative particle. So the
Metallic bonding is actually the force of attraction, and it is actually between opposite charged particles. So you can say that electrostatic force of attraction. You cannot call them intermolecular force. Keep you remember, you cannot call them intermolecular forces between the molecules. You cannot call them. You need to call them electrostatic force of attraction between delocalized electrons and positive ions. Is that clear, बच्चों? सर सेम एलिमेंट भी होगा या कंपाउंड है? Within an element होगा, ये किसी और के साथ नहीं मिल रहा, within an element होगा. सर आप सैंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा देंगे, क्योंकि वो मेरा जब डिस्कनेक्ट हुआ था तो मैंने वो नहीं लिखा था. बेटा रिकॉर्डिंग से देख लेना, आपकी क्लास के बाद कोई मसला थोड़ी, बाकियों का टाइम वेस्ट हो जाएगा. नहीं सर, बस मैं स्क्रीनशॉट लेना है. चलो ले लें. सर जी बेटे. लोकलाइज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? डीलोकलाइज्ड, यस. जो लोकलाइज्ड नहीं है. लोकलाइज्ड का मतलब फ्री नहीं होता है, डीलोकलाइज्ड का मतलब फ्री होता है. मतलब वो फ्रीली घूम रहे हैं, उनकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, दे आर फ्रीली मूविंग. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल थिंग्स आर सेम, राइट? राइट सर. सर ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये सिर्फ प्योर मेटल्स में पॉसिबल है ना? यस. उसके अलावा अगर आप एलॉयज की बात करते हैं तो एलॉयज के अंदर भी पॉसिबल है मेटालिक बॉन्डिंग, कोई मसला तो नहीं. सर अगर इम्प्योरिटीज हो तो फिर तो नहीं होगी ना पॉसिबल? इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई और चीज मिक्स हुई हुई हो, मतलब थोड़ी बहुत कोई चीज हो, मतलब जो प्योर Alloys- ना करे मेटल को, मतलब प्योरिटी खत्म कर दे. देखो डेफिनेटली अगर आपके पास इम्प्योरिटीज हैं वहां पर, if you are saying that you have impurities over there, that's fine. impurities हो सकती हैं. तो impurities अगर होंगी तो वो आपकी स्ट्रेंथ को भी वैसे ही अफेक्ट करेंगी जितनी impurities होंगी. ठीक है ना? अगर फॉर सपोज आपके पास 90 ग्राम्स मेटल है और 10 ग्राम आपने इसके अंदर impurities डाल दी है, तो 90 ग्राम के अंदर तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी ना. ओके सर, समझ गया. But definitely due to the impurities there will be the less metallic bonding. अगर वो 100% होता तो metallic bonding भी 100% होती, right? ठीक है सर. इसकी एग्जांपल है कोई? You need to keep remember, just will let you know soon. Nah? But first we need to complete this, then I will let you know. Okay, so you just need to keep remember, if the number of delocalized electrons are lesser, then the metallic bonding is lesser. When the number of delocalized electrons are greater, then the metallic bonding is greater. So you can say that when delocalized electrons increases, metallic bonding increases. Metallic bonding increases, right? Once the metallic bonding increases, you can say that the strength of the metal increases. Once the strength increases, the melting point and the boiling point densities are increased. So you can say that that's why when you talk about sodium, magnesium, and iron, there will be different melting points. Like it is 98 degrees Celsius having melting point. It's like 660 degrees Celsius melting point. It has having 1538 degrees Celsius melting point. So we have different melting points in different metals, because sodium is having only 1 electrons in the last shell. That is why the metallic bonding is lesser. The strength of the metal is lesser, and the melting point is lesser. Once the number of electrons increases, definitely the charge in the nucleus will be increases. The number of electrons, delocalized electrons, the C of delocalized electrons will be bigger, and then definitely the metallic bonding will be bigger, then the strength will be bigger, and then the melting boiling points will be bigger. Right, बच्चों? सर ये वाली Right, बात sir. repeat Yes, करना. You just need to keep remember, once the number of electrons increases, आखिरी शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में बढ़ेंगे उतने ही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे. जाहिर सी बात है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना एलिमेंट, तो जब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा. जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज +2 आ जाएगा. जब न्यूक्लियस पे भी चार्ज +2 होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बढ़ जाएगी. इसकी वजह से Yes, मेटल sir. की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. राइट? सर वैलेंस Right, sir. इलेक्ट्रॉन्स. यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सर लेकिन अगर सेम ही ग्रुप का हो, लाइक जैसे लिथियम और पोटेशियम, तो फिर पोटेशियम में ज्यादा होगा ना, क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग. विद इन अ ग्रुप की अगर आप बात करें तो वहां पर आपके पास मसाइल अलग हो सकते हैं. उसकी वजह ये है कि जब आपके पास स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जी सर. विद इन अ ग्रुप की अगर आप बात करें, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, स्ट्रक्चर आपका बड़ा हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो भी रहे हैं,
तो न्यूक्लियस की पहुंच से दूर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनको कैच करना मुश्किल होता है। आप इतनी डेप्थ में ना जाएं, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ। अगर आप एएस में केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे देन आई विल टेल यू दीज ऑल थिंग्स, राइट? राइट सर। वरना जो दूसरे बच्चे हैं वो जो थोड़े से परेशान हो जाएंगे, राइट? आपको अलग से पूछना है, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर, राइट? Okay, then we are going to move the next thing, and you need to keep remember if you talk about the structure, so you can see in the structure the two physical properties of the metallic bonding are set in this chapter, metallic bonding. अभी सिर्फ दो physical properties की हम बात करेंगे, बाकी हम metals में बात करेंगे. So you can see this, the structure is layered, right? Yes sir. So when Yes, sir. we apply pressure or force on this structure, so the layers can slide over each other. So this is one of the physical property, you can call this malleability, right? Malleability, ठीक है भाई? So the metals are malleable because the atoms are arranged in layers. So when we apply pressure on them, so the layers can slide over each other. That is why metals are malleable. When we apply pressure on them, so that their shapes can be changed, right? So that is why they are malleable. And then you can see this, a sea of delocalized electrons are there. So when you conduct electricity through them, so they are the best conductor of electricity as well, right? Right sir. So the two physical properties are set over here. Only two physical properties that are connected with the structure right now. You need to keep remember, the first one is conduction. So you need to keep remember that metals have what, bacho? Metals have delocalized electrons. Yeah, metals have sea of delocalized electrons, right? Sea of delocalized electrons. That is why they can conduct electricity, right? That is why they are good conductors, or you can say that they are best conductors, right? Yes sir. Right. And you need to Yes, sir. remember the state. Yes, sir. You need to remember the state. Metals can conduct electricity. Metals can conduct electricity in solid and molten state. In solid and molten state. And if you talk about mercury, 7 mercury can conduct electricity in that liquid state, right? In its liquid state. दूसरी बात ये कि if you talk about the conduction, so during the conduction, when the electricity is going to be passed out, the electrons can replace by the new one. Electrons can replaced by new electrons, right? Electrons can be replaced by new electrons, while you can say that positive ions remain on their position, while positive ions remain on their position. सर ये Just con- इलेक्ट्रॉन्स सर जो है रिप्लेस कैसे हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल कैसे है? What is electricity? If you talk about electricity, so electricity is the flow of electrons, right? So when yes, sir. the electricity is passing through the wire of copper, so the अच्छा electrons ठीक है सर, present हाँ ठीक है सर, in समझ the गया सर. copper can be replaced by new electrons, right? जी. सर जो एक एमसीक्यू था उसमें था कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है मेटल्स में से, तो आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जबकि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फिर एक जगह वही स्टिल रहते हैं. Yes. ठीक. And you need to keep remember ना, अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव आयन भी मूव करते तो क्या होता? फिर सोचो, आपने घर के अंदर कॉपर का वायर लगाया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और उसके अंदर जो एटम्स है ना वो बहते हुए इलेक्ट्रिसिटी के साथ निकल गए, तो कल को तुमने जो कॉपर का वायर अपने घर में लगाया था दीवार में, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के साथ मिलेंगे सारे कॉपर, है ना? जी सर. सो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. अगर एटम्स ही मूव कर जाएंगे तो फिर तो एलिमेंट ही तबाह हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व बट द एटम्स विल बी ऑन देयर फिक्स्ड पोजीशन, राइट? राइट सर. And then if you talk about the malleable property, so the metals are malleable because they are, you can say that their atoms are fixed, or they are having layered structures like this, right? Right. Yes sir. So for suppose if we are applying pressure over here, so the structure can be changed, or you can say that the layers can be disturbed. So one layer or two layers can be slide over to or one layer. So in this way, the shape of the metal can be disturbed by the application of force or pressure. So this is what the term malleable means. सर जी बेटे. सर जो मिक्सचर्स होते हैं वो उनको हमें शेप चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि उनके अंदर और भी डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं.
नहीं Okay. सर देखो ये because the atoms are arranged in layers, right? जी सर So they can slide over each other easily. So to avoid this, we make them alloys. Okay, हम उनको क्या बना देते हैं? हम उनको alloys बना देते हैं. Right. जी सर मैं एलॉयज ही कहना चाह रहा था सर Yes. So लेकिन this is actually वर्ड नहीं आया a mixture of metals. And why we are going to do this? We just want to do this कि ये जो layers हैं एक दूसरे पे slide ना हो. For suppose ये iron का atom है और ये copper का है. So definitely अगर दो अलग-अलग elements हैं तो the size of their atoms are different, right? So this will be like this. You can see this. If you mix two different size of atoms of the different metals, so now it's difficult for them to sliding over each other. Now they cannot slide over each other. They require greater energy for sliding, right? जी So सर they become strengthened. They become strengthened, right? And it's all about due to the difference in atomic size. This is all about due to the difference in atomic size, or you can call them as atomic radius as well. Due to the difference in atomic radius, now the sliding is not possible. So it will want higher temperature or higher force or higher pressure for making them like change. For suppose we are using the doors and windows and the grills in our houses not made up of completely iron. We use them as a steel, right? Why we are using steel? Because steel is more strengthened than iron, right? And the reason is this. सही है सर क्लियर Is that clear, every one of you? सर हम क्लियर मैल्योबिलिटी सर में ये कह सकते हैं क्या कह रहे बेटे? सर हम मैल्योबिलिटी में ये कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया तो इस वजह से उनके जो बॉन्ड्स हैं वो रिफॉर्म हो रहे हैं Bonds reform हो रहे हैं. Bonds कहाँ से आ गए इसमें? Now the layers cannot slide over each other because due to the difference in atomic size, the layers are disturbed. When the layers are disturbed, then they cannot slide over each other. That is why they become strengthened alloys. But if we talk about the malleability is a property of metals. This is all the movement of layers over each other. यस सर Right? सर जिस Any तरह problem, बच्चों? क्रोमियम और आयरन का अगर कोई एलॉय होगा क्लियर सर तो वैसे ही होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा. किसी भी तरह का हो सकता है. अब हमें नहीं पता कौन सा एटम कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसे. तो एक तरह से ऑब्स्टिकल बन जाता है स्लाइडिंग के लिए Yes. राइट सर इसका सही है, सवाल बच्चों. पॉसिबल है पेपर में आना बिल्कुल आता है. MCQs तो लाजमी आते हैं इसके. You will see this on a past paper session inshallah. And first of all, you need to keep remember बच्चों, the chapter is over here, the ended, right? And on the coming Monday, you will have a test of this, right?